Hello friends, welcome to Science at Click. We are discussing the lesson Elements, Compounds and Mixture, and in this lesson we have already discussed elements, what are elements, how they are classified further into metals, non-metals, metalloids and noble gases, and in this video we'll be discussing compounds. Okay, for more interesting videos on science, please subscribe to Science at Click. Okay, so let's start with the topic compounds. Now, when two or more elements combine together, they form compounds. When they are combining in a fixed ratio and they are forming altogether a new substance, that is our compound. What is it? Compound. So, when two or more elements are there together, not just there together, but when they are linked to each other, what they are forming? They are forming a compound. The most important thing that they are combining in a fixed ratio. For example, if we take water, example of water, which is H2O, the two elements which are combining to form water are hydrogen and oxygen. Okay, there is one more compound in which hydrogen and oxygen are reacting with each other to form hydrogen peroxide. Now, in both these compounds, hydrogen, the two elements that are involved in the formation of these compounds are hydrogen and oxygen, but each time their proportion is different. Here they are combining in 2:1 ratio. Here they are combining in 2:2 ratio. The number that is in subscript next to the symbol of the element is giving you how many atoms of that particular element is present in that compound. I'll repeat, number which is written in a subscript as a subscript next to the symbol of the element is giving you the information how much atoms are there of that element in that particular compound. जो नंबर आपके एलिमेंट के सिंबल के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, those many number of atoms क्या है आपके वो कंपाउंड में प्रेजेंट है. ओके, सो हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन के सामने कोई नंबर नहीं लिखा, दैट मीन्स ऑक्सीजन है ही नहीं क्या उसमें? उसमें है, तभी तो उसके फॉर्मूला में H2O है ना, वो लिखते हैं हम लोग वाटर के फॉर्मूला में. तो ऑक्सीजन का एटम है, उसके सामने नंबर नहीं है, दैट मीन्स ओनली वन एटम इज देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एक मॉलिक्यूल की बात करें, ऐसे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है वाटर के एक ड्रॉप ऑफ वाटर में. आगे बात समझ में? सो 2:1 प्रपोर्शन में क्या है आपका? वाटर है. 2:1 प्रपोर्शन में क्या है? आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन है वाटर में. ठीक है, ओके. नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ही एटम्स है, वही दो एलिमेंट्स है, लेकिन हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन के भी दो एटम्स है. सो दे आर इन टू स्टेज. इनको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो दे आर इन 1:1 प्रपोर्शन, मतलब जितने हाइड्रोजन के एटम्स है उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स है उसमें. सो दैट मेक्स अ डिफरेंट कंपाउंड. Water is different, hydrogen peroxide is a different compound. Okay, so are you getting the meaning of a fixed ratio? When two or more elements are combining together, they are combining in a fixed ratio. If that ratio changes, different compound is formed. So for every compound, the ratio of the atoms is fixed. Ratio of atoms of different elements is fixed. Let's talk about another example. कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड we are exhaling, okay, every day every minute we are exhaling कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अभी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग. इन वन मॉलिक्यूल कार्बन के कितने एटम्स है? 1, क्योंकि इसके सामने कोई नंबर नहीं है. ओके, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2. सो इट इज कंबाइनिंग इन 1:2 proportion. Okay,
though it is a pollutant because its percentage is increasing in the atmosphere day by day and it's causing problems, it is increasing the temperature of earth, global warming, everything, but this is also useful to us if it is in proper proportion. Only because of this plants are making their what, they can carry out their photosynthesis and we are dependent on the plant, right? So carbon dioxide is useful also. There is one more compound, that is carbon monoxide is a poisonous pollutant. क्यों है पॉइजनस, क्यों है टॉक्सिक? क्योंकि अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो जो हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन है, वो अटैच हो रहा है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को अटैच करना और हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना, यही है हेमोग्लोबिन का काम ब्लड में। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो रहा है, एट दैट टाइम that hemoglobin cannot carry your blood oxygen to the cells, right? So it is a toxic substance. It is also made up of carbon and oxygen, but here carbon and oxygen is in 1:1 proportion. Forget that what is carbon monoxide, why it's pollutant, everything, but the main thing that is related to this topic right now is in carbon dioxide, carbon and oxygen are in 1:2 proportion. So when carbon and oxygen are combining in 1:2 proportion only, they will always make carbon dioxide. If they react with each other in 1:1 proportion, which takes place in incomplete combustion of carbon or any fuel, so at that time your carbon monoxide is formed, okay, in 1:1 proportion. तो जब proportion change हो रहा है तो आपका compound change हो रहा है for a particular compound, even if the reacting elements, the combining elements are same, if the proportion changes, your compound changes. आगे बात समझ में? अभी examples देख लेते हैं compounds के, क्या क्या है। water है, उसके बाद carbon dioxide है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, शुगर है, सॉल्ट है। these are all what? different compounds. salt is the salt that we are eating daily, iodized नमक खा रहे हो, that is your NaCl. sugar means if you are talking about glucose, it's C6H12O6. this is the glucose. sugar that we eat is a sucrose, that is C12H22O11. So in this sugar, carbon, hydrogen and oxygen are combining in a fixed proportion to form sugar. In glucose also, carbon, hydrogen and oxygen are combining in a fixed proportion to form a glucose. Abhi this H2O, H2O2, CO2, CO, C6H12O6, then NaCl, ये सारे चीजों को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले ये समझ लो कि मॉलिक्यूल क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि इन केस ऑफ एलिमेंट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम. Okay, when atoms of different elements are combining to form a new substance, that is a molecule, this molecule is present in a large number in a compound. If I am talking about a drop of water, it has billions of molecules of what? H2O. water के कितने molecules है? बहुत सारे molecules है, बहुत सारे. okay? तो एक छोटा उसमें से हम लोगों ने अलग कर लिया, smallest part that is repeating itself. okay? तो वो क्या है? हमारा मॉलिक्यूल. और वो मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल Fe फॉर आयरन, Co फॉर कोबाल्ट. okay? वैसे ही in the same way, according to the proportion of different elements, molecule is represented by a molecular formula. So H2O is what? Molecular formula of water. okay? ये H2O repeat होगा in a drop of water.
Getting this, getting the concept of molecular formula, it is the representation of that compound. Okay, and why molecular formula? Because molecule is the basic unit, a smallest part. जैसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है आपका एटम, वैसे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? molecule. If you break down, even if you break down that molecule, it's not easy, but even if you cut it into different parts, then you will get hydrogen and oxygen atom. So सब matter का basic unit atom है, but when we talk about compound, those atoms are combining in a fixed proportion to give you a molecule. So smallest particle of a compound is known as molecule. हम लोग हायर क्लासेस में जब डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दैट टाइम सारे कैलकुलेशन हम लोग ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं. ओके, सो हर मॉलिक्यूल का मतलब हर कंपाउंड का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जो हमको बताएगा कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं एंड ईच एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं. देखो, एक एलम सब्सटेंस होता है, एलम जो दैट इज विच इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. एक सॉल्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉल्ट, तो उसका फॉर्मूला है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है कि इसमें पोटेशियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है. फिर और एक सॉल्ट है जिसमें एल्यूमिनियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, और फिर उसमें उसके पास 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी है. तो ये सारा एलम के एक मॉलिक्यूल में इतना सारी चीज़ है. सो व्हाट मॉलिक्यूलर, यहाँ पे हम लोग को ग्लूकोज का और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं. दैट वी हैव कार्बन, hydrogen and oxygen in our compound in 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen. What are they are giving you? They are giving you sucrose, which is the sugar that we eat every day. Okay, so this is all about compounds. देखो, this is your glucose, structure of glucose. अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर नहीं बताता. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा आपको? सिर्फ उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं और ईच एलिमेंट के कितने कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू गिव यू द कंपाउंड. ओके, सो दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Now this is the structural formula. This will give you the structure of that molecule is structural formula. कुछ टाइम molecular formula same होते हैं लेकिन compounds अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका structure अलग होता है, उनका linking अलग होता है. ऐसे compounds को हम लोग isomers बोलते हैं. That will be discussing in the 10th standard, not now. But for timing, remember that molecular formula will give you only the information how many atoms of different elements are there in your molecule of a compound. Structural formula will give you the information how these atoms are actually arranged with each other. So this is your glucose. Every corner of this hexagon is carbon. Only one carbon corner is there with oxygen. Okay, and every carbon is attached to one hydrogen, one hydroxyl group, one hydrogen, another hydroxyl, and this one. And the sixth carbon is here. If you want to count, you can take a screenshot and count the number of carbon atoms. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So C6 are there. Let's talk about hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's talk about oxygen. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is your glucose. Now methane. Methane is also, this is the smallest carbon compound. One of the fuel, methane gas is used as a fuel. It is C4, carbon at the center and 4 hydrogens. Okay, so CH4 is its molecular formula, and if you draw the structure like this is its structural formula. This is clear?
Okay, let's move forward. Elements lose their original properties, means when they are forming compound, when they are combining, when water is formed between hydrogen and oxygen, their original properties of hydrogen gas and oxygen gas are lost when water molecule is formed. Let's see, first we'll take the example of hydrogen, oxygen and hydrogen, means this is water molecule. Water molecule is formed from hydrogen and oxygen. Hydrogen gas is a highly flammable gas. It catches fire quickly and it bursts everything which comes in contact with it. Okay, oxygen gas, hydrogen gas is a flammable gas. Oxygen gas supports burning. But when these two gases combine together to form a molecule of water, water is neither flammable nor supports burning, but in opposite to that, what it does, it opposes burning. आग लगी हो तो पानी फेंकते हो ना, राइट? सब टाइप के फायर के लिए नहीं यूज होता वाटर. ओके, जब फायर एक्सटिंग्विशर स्टडी करेंगे तब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स. बट बेसिक, अगर कोई थोड़ा अमाउंट में आग लगी है, यू पुट वाटर टू सीज इट ऑफ. Okay, so its component elements are, one is flammable, the other supports burning. Without oxygen you cannot carry out burning process, but water when formed between these two elements, it's neither flammable nor supports burning. These two are gases, this is liquid. Means there is no link between the properties of original substances and properties of product. Means properties of the elements from which is it from form and properties of compound. NaCl, salt. ओके, ये सॉल्ट हम लोग रोज खाते हैं. ये बना है सोडियम और क्लोरीन से. क्लोरीन गैस इज ए येलो कलर गैस. ओके, ब्लीचिंग पाउडर पता है स्विमिंग पूल में डालते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन रिलीज करता है, इसलिए वो डिसइंफेक्ट होता है. कंज्यूमेबल थिंग नहीं है, वेरी हार्श टू स्किन ऑल्सो. ओके, and it's a gas. Sodium is a metal, highly reactive metal, very high reactive metal. You cannot keep it open in the air also. When it comes in contact with air, it starts reacting, and when it comes in contact with water, it reacts so violently that it catches fire. Okay, tremendous amount of energy, so you have to keep it always submerged in a sodium. So such type of metal when reacting with quite poisonous gas, inhale नहीं कर सकते, क्लोरीन पॉइजनस है, सफोकेट करेगा हमको. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो हम लोग को एकदम स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, जो सालों साल यू कैन कीप इट इन योर किचन. ओके, अ स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म एंड दिस इज एडिबल. You are eating it every day. It is very much required by the body to carry out various reactions. Salts and minerals are required by our body. So are you getting the concept that when elements are reacting, they lose their original property and the compound which is formed shows altogether different properties. Okay? Then compounds are pure substances. हाँ भाई, प्योर है, दो एलिमेंट्स का मिक्सचर नहीं है ये. ऑल टुगेदर एक अलग कंपाउंड बन रहा है और यही कंपाउंड रिपीट हो रहा है आपके क्रिस्टल ऑफ शुगर में या फिर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट में. क्या हो रहा है, यही एक मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, इसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है, एंड हेंस इट इज अ प्योर सब्सटेंस. The smallest particle I have told you is molecule. As smallest particle of element is atom, smallest particle of a compound is known as molecule. Compounds cannot be broken down easily into its constituent elements by physical method. Hand picking, filtration, sieving, ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल. बॉइलिंग, ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल प्रोसेसेस है. इनसे हम लोग वाटर का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉल्ट का, सोडियम क्लोरीन अलग नहीं कर सकते. इसके लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होती है. सो separating constituents of a compound is not a easy process. Okay,
This is all about compounds. Compounds, when they are formed between different elements in a fixed proportion, and that is represented by molecular formula. When we draw it in a structure, how they are combining, we call it a structural formula. They always lose their original properties and altogether show different properties. When compound is formed, they are pure substances and they cannot be easily decomposed or broken down into their elements. Okay, this is all about compounds. So we'll stop over here. We'll discuss mixtures in the next video. Thank you.